We'll check the stream. And I think I should send the link. Wait a second. मैं लिंक सेंड करता हूँ कि क्लास 19 ना समझ लिया हो. Just a moment. This class 19th. Wait a second. Yeah, link is copied. Wait a second. Link is copied. I think it is 9th class. Okay. So let's start now. तो टुडे इज साइंस टर्न एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोशन. मोशन में डिस्कस किया था हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना. न्यूटन्स थर्ड लॉ के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. तो नहीं, मोशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स थर्ड लॉ के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. सो फर्स्ट लॉ and third law is action and reaction. First law is first law हमने डिस्कस कर लिया था आई थिंक, और थर्ड लॉ डिस्कस कर लिया था. अब सेकेंड लॉ डिस्कस करते हैं. तो एक बार इनको रिकैप करेंगे. फर्स्ट एंड थर्ड लॉ डिस्कस कर रहे थे आई थिंक. Link I have sent. Then let's see. So let's come to the presentation. Let's come to the point. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Now, we have discussed and लास्ट टर्न पे मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था. सो फोर्स वाले चैप्टर में आई विल कम टू प्रेजेंटेशन. स्टार्ट. फोर्स में हमने बेसिक तो डिस्कस किया ही. We have discussed first law, Newton's first law. First law and Newton's third law.
and today we'll start Newton's second law. But why only Veda? Acha, now a little bit late. Okay, so first law and second law, and today we'll discuss Newton's second law. फर्स्ट लॉ स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर इफ ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड देन ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट और इट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, एंड इफ this was Newton's first law. If all the forces are balanced, then object will move with constant velocity, or it will remain in rest. So जो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है रेस्ट में रहने की या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने की, दैट टेंडेंसी इज नोन एज इनर्शिया. तो एक और टर्म आएगा इनर्शिया. Inertia is basically natural tendency of object to remain in rest or to move with constant velocity. This is inertia. Inertia. You can say this is tendency of object to remain in rest or to move with constant velocity. So इस पे प्रैक्टिकली हमने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है. नाउ वी विल डिस्कस इनर्शिया. फर्स्ट लॉ में डिस्कस करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस न्यूटन्स सेकंड लॉ. थर्ड लॉ के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. नाउ वी विल डिस्कस न्यूटन्स सेकंड लॉ. सो लेट अस मूव टू द प्रेजेंटेशन. और इसमें भी जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो मोशन की इक्वेशन डिफिकल्ट है. न्यूमेरिकली इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. तो न्यूटन सेकेंड लॉ रह गया था. वी विल डिस्कस न्यूटन सेकेंड लॉ. और न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल. आई विल प्रेजेंट इट. आई हैव अ प्रेजेंटेशन ऑन इट. लेट मी. ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. से पहले we just little bit recall न्यूटन्स थर्ड लॉ पे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं. we just little bit recall न्यूटन्स फर्स्ट लॉ and then we will use. Let's do in systematic form. So what was the first law? Every body persists in the state of being rest or moving. थर्ड लॉ तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया. अब फर्स्ट और सेकंड लॉ को कनेक्ट करते हैं. फर्स्ट और सेकंड लॉ. So every body persists in the state of being at rest or moving uniform state forward, except in so far as it is compelled to change its state by force impressed. तो ये बेसिकली न्यूटन ने जैसा दिया था उसका स्टेटमेंट है. इसको सिंपल लैंग्वेज में हमने स्टडी कर लिया है ना. दिस इज रिटन इन द ओरिजिनल बुक ऑफ न्यूटन. दैट इज आई थिंक प्रिंसिपिया मैथमेटिका. उसमें इस तरह से डेफिनेशन लिखी हुई है अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ. सो anything which is in rest will remain in rest. That is the natural tendency of object. So this is basically Newton. This is Newton, and
He is Galileo. Basically, the Newton's law was Newton's law. न्यूटन ने बाद में इसको लॉ के फॉर्म में दिया था. इससे पहले फर्स्ट लॉ के बारे में जो स्टडी है वो गैलीलियो ने शुरू कर दी थी. मतलब गैलीलियो ने इसको स्टडी करना लॉ के फॉर्म में, रूल के फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट कर दिया था. बट फर्स्ट लॉ को जैसे ऑब्जेक्ट नेट फोर्स अगर जीरो तो रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गैलीलियो. बट लॉ के फॉर्म में, बाद में बुक के फॉर्म में जो पब्लिश कराया वो न्यूटन ने कराया. सो दैट्स व्हाई गैलीलियो का पिक्चर थोड़ा सा बड़ा है और न्यूटन का पिक्चर थोड़ा सा छोटा है. ओरिजिनली दिस वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, आखिरी में कंपाइल्ड बाय न्यूटन्स. तो अगर इधर उधर से नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा. सिमिलरली यू कैन सी एनीथिंग इफ द फोर्सेस आर बैलेंस्ड द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट. अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, अभी येलो फोर्सेस वाज बैलेंस्ड तो दिस वाज रिमेन इन रेस्ट. और अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, रेड फोर्स इज अनबैलेंस्ड, व्हेन इट इज अनबैलेंस्ड इट विल मूव. So either it will in rest or move with constant velocity. Similarly, another example, इसको हम प्रैक्टिकली बहुत शो कर चुके हैं, एक बार लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं. ये फ्रिक्शन फोर्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे इंटरलॉकिंग होती है सरफेस की, है ना, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है, वो बैलेंस होता है. नाउ समथिंग, if some ball is moving like this and something is moving with constant velocity, that means net force on it zero, है ना, net force on it zero. यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो भी इस पे फोर्स लग रहा है that will be zero. तो कोई भी अगर constant velocity से मूव कर रहा है या रेस्ट में है, and if it is moving with constant velocity or it is in rest, the net force on it zero. So this was Newton's first law, a little recap of Newton's first law. Now I'm going to discuss Newton's second law. Newton's second law. So this was Newton's first law. Now I'm going to discuss Newton's second law. Now what is Newton's second law? Newton's second law of motion. So that is given by F is equal to ma. F is basically force is a vector quantity. फोर्स का जब भी हम किसी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन होती है. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऐसे एक सिंबल लगाते हैं जिसको हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. सो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? व्हेन देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूटन सेकंड लॉ. अभी इसको डिटेल फॉर्म में स्टडी करेंगे. व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस फोर्स, व्हेन देयर इज अ अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर ये फोर्स है, ऑलवेज रिमेंबर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बेसिकली दो तरह की क्वांटिटी होती है ना, दो तरह की क्वांटिटी होती है. एक तो वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन होती है और एक वो क्वांटिटी होती है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है. जैसे मास होता है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं है, मास का डायरेक्शन नहीं बताना पड़ेगा. ठीक है, जैसे अगर 4 kg का मास है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं, ब्लॉक का मास है तो कोई डायरेक्शन नहीं. बट इफ यू अप्लाई अ फोर्स समथिंग, इफ यू अप्लाई अ फोर्स somewhere, if you apply the force, so you can see the practical situation here. If you apply a force, then there will be a direction. See, suppose I will apply a upward force on it and something, है ना, जैसे इस पे ऐसे फोर्स लगाया, तो जैसे you apply a force like this, तो ये मोबाइल है और इस पे इस तरह से फोर्स लगाया, तो this is the direction of force. अगर ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे you can see this is the mobile and you can apply upward force. तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है. See, finger is applying upward force in upward direction like this. Is it clear? And here finger is applied force in downward direction. So force is a quantity जिसकी एक डायरेक्शन है. मगर मास, जब कोई चीज, तो मास 30 ग्राम 40 ग्राम लेने आते हो, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है. So what is Newton's second law? F is equal to ma. F is equal to mass into acceleration. M is mass. So जब भी, and this is unbalanced force. So this is unbalanced. This is valid for basically if different forces are acting, then we will take the sum of all the forces. Okay, practically I will explain it. Now assume if force is acting like this,
sorry, presentation. If force is acting like, assume that this is basically unbalanced force. So if force is acting like this, the block will accelerate. So Newton's second law is F is equal to ma. So this force is unbalanced force. So when there is unbalanced force, the object accelerate. एक्सेलरेशन का मीन्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा. ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा मतलब उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, है ना, उसका वेलोसिटी चेंज होगा. सो व्हेन देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स द वेलोसिटी विल चेंज. सो this is the formula for Newton's second law. F is equal to ma, where m is mass. So this is not, यहाँ पे देखो, this is not the formula, this is not like just like that. F जो है m पर लीनियरली डिपेंड करता है, ये किसी और पावर पे डिपेंड नहीं करता. इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन a स्क्वायर और रूट a, है ना. जस्ट कीप इन माइंड कि f मास और उस पे लीनियरली डिपेंड करता है. सो जस्ट मास का पावर 1 पे डिपेंड करता है और a का पावर 1 पे डिपेंड करता है. तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल सिचुएशन. सपोज यू अप्लाइड अ 10 न्यूटन फोर्स. Force is measured in Newton, 10 Newton force. That means 10 kilogram per meter square. This is the unit of Newton. Mass into acceleration. Acceleration is meter per second square. Mass is kilogram. And suppose mass is 2 kg. So you can find the acceleration just by doing force upon mass. So this is 10 kilogram meter per second square. Newton is basically mass into acceleration, kilogram into meter per second square, and here this is 2 kg, and you can find the acceleration, and you just divide it by 2 both side, and this will cancel out. You will get acceleration is equal to 5 meter per second square. That means if 10 Newton force applied on 2 kg object, it will accelerate with 5 meter per second square. That means in 1 second its velocity is increased by 5 meter per second. In 1 second its velocity is increased by 5 meter per second. So like okay, and suppose if you change, this is 20 Newton. If you apply 10 Newton force, if you apply less force, acceleration is 5 meter per second square. Suppose you double the force, and you have not changed the mass. So acceleration will be just 2 से divide किया, acceleration will be 10 meter per second square. That means if you double the force, the acceleration will double, है ना. That is the practically very important. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और जैसे डबल फोर्स लगा दिया, यानी किसी चीज को अगर एक आदमी धक्का दे रहा है, अब अगर 2 आदमी धक्का देंगे तो वो डबल एक्सेलरेशन से मूव करेगा, एक्जैक्टली डबल से मूव करेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ F इज इक्वल टू ma. इफ यू, और ये दिस इज द प्रैक्टिकल फॉर्मूला. इसको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से निकाला गया है, प्रैक्टिकल करके निकाला गया. मतलब जैसे ही हमने कोई पर्टिकुलर ब्लॉक लिया, पर्टिकुलर मास का ब्लॉक लिया, हमने फोर्स को डबल किया तो एक्सेलरेशन भी डबल हो गया, है ना. फोर्स को डबल किया तो एक्सेलरेशन भी डबल हो गया. फोर्स को जैसे डबल किया एक्सेलरेशन भी डबल हो गया, लाइक दिस. So this is them. Now दूसरी सिचुएशन है, फोर्स को डबल किया, एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा. एंड इसमें now so basically acceleration depends on force for constant mass. So this is a practical formula. Just remember F is equal to ma. Yani if there is net forces, there is net unbalanced force, the object will accelerate. So I will show some situation of unbalanced force. See, I will draw a block. So we have a block, see we have block, and let it color it. Yeah, this is our block. So force is measured in Newton. Suppose a 10 Newton force is applied on it. Newton means kilogram, 10 Newton forces. And a backward force is
suppose 5 Newton, and the mass of block is suppose 2 kg. So when you apply F is equal to ma, this is basically unbalanced force. He wants find acceleration. This is the question basically. I just write down the question. 10 Newton force, 5 Newton force. है ना? Mass is 2 kg. Find acceleration. And because forces on object are not balanced, these two forces are acting on the block like this. And this is acting on the block in forward direction. This is acting on the block in backward direction. No, this is backward direction. And these forces are not balanced. Here this head is the point of application of force. Normally इससे पहले मैंने बताया था कि tail से point of application show होता है. कभी-कभी head से भी show करते हैं. Here this head shows. Here just write H head. Head shows point of application of force. Head shows point of application of force. Application of force. Now the formula is F is equal to m into A. The formula is F is equal to m into A is a vector quantity. This will have direction. You can choose forward direction as positive. Now there are only two directions. Forward is positive. In 10th class you have to consider only two direction. So detail vector is not required. So forward direction is plus and backward direction is minus. We just write this. F is equal to ma, forward plus and backward minus. So you will write plus 10 and minus 5, and this will give you mass into acceleration, 2 into acceleration. So basically F is total unbalanced force basically. So you have used this formula, F is equal to ma. 10 is in forward direction, 5 is in backward direction. Because 10 is in forward direction, we have taken 10 as positive, and 5 is in backward direction, we have taken 5 as negative. So this is 2 into A, and you will get A is equal to, this is 10 minus 5, 5 by 2. Okay, 5 by 2, and this is 2.5 meter per second square. 2.5 meter per second square. Okay. So 2.5 meter per second square. So I hope you understand it. Hello. I hope, please comment only if you understand it. मुझे live तो कम दिखाई दे रहा है. Please comment if you understand it. Please comment you understand it so that I can give you another question. Another question is for practice. You have to do. So please comment if you understand it. Okay, so okay, so I'm going to give you a question like this. So just solve a similar question.
Choose forward positive and backward negative. And in the point of application is head. So 20 Newton force is acting in a backward direction, and ten Newton force is acting in forward direction. And suppose here mass is 4 kg. Forward I have chosen positive and backward I have chosen negative. So use F is equal to ma. F is basically a vector, so that it will have positive or negative sign. F is equal to ma. Find acceleration and find acceleration. Acceleration. Find acceleration. Just solve it, and I will give you a few time. I will play a concentration music. I'm going to give you 5 minutes and solve it and send it. Solve it. Solve it. If you understand the previous one, please solve it. I'm going to give you 5 minutes for it, and I will play a music, concentration music. Take 5 minutes to solve it. फाइव मिनट तक के म्यूजिक बजेगा, तो जब ये म्यूजिक बजेगा तभी खत्म करना है. आई हैव गिवन यू 5 मिनट, तो लिसन द म्यूजिक एंड सॉल्व द क्वेश्चन. I'm going to give you solve the question and send on WhatsApp. Solve the question and send on WhatsApp. सॉल्व करो और WhatsApp पे सेंड करो, है ना. सॉल्व करो और WhatsApp पे सेंड करो. Three minutes more, 3 minutes. I'm checking the WhatsApp. You can pause the video.
I hope you are solving. 2 minutes more, 1.5 minutes, 1 minute 30 second more. Send it fast. 5 मिनट जब पूरा हो जाए तो जैसा भी हो करके भेज दो फटाफट. Now 32 second more, 30 second, 32 second. Now stop and send it, send it. जैसा भी अगर तुमने किया है send it. Over. So let's start, and no one have sent it. So I'm waiting. So you have not sent it. That means you are not trying it. Please try it. This is very simple. This question is very simple. And if you did it, please send. जो भी जैसा भी उल्टा सीधा किया हो, please send. Okay. Now simple, use F is equal to ma. So you have to use balanced forces. Sorry, F is basically unbalanced forces, and because this force is in backward direction, so I will take -20, and this is in forward direction, so I will take +10. Minus and plus represent the direction. Today we are talking about Newton's second law. Newton's second law is F is equal to ma. Force is equal to mass into acceleration. But F is a vector quantity, and basically F is unbalanced force. So +10 -20 is in backward direction, and +10 is in forward. Plus represent the forward direction. +10 -20, and mass of the block is 4 kg, and then acceleration. It was very simple. So this will be -10 is equal to 4a. What this symbol means? A have direction. A is vector. This symbol means A have direction. तो जिसकी भी डायरेक्शन होती है उसमें ये सिंबल शो करते हैं. तो just so A will be -10/4 by 4. This will be -10/4. That means 5/2. That means 2.5 -2.5 meter per second square. That means this block is moving in negative direction. Basically, what is the meaning of this? This block is moving in negative direction, like this. Negative direction with acceleration 2.5 meter per second square. Is it clear? I hope you understand. 2.5 meter per second square. So now,
I hope you understand. अच्छा, I have given you homework. So अभी जो लाइव प्रेजेंट है, लाइव ऑब्जर्व कर रहे हैं 7 लोग, उसमें से किसी ने भी अगर होमवर्क किया हो तो फॉरवर्ड कर दो, मतलब अगर सेंड किया हो तो फॉरवर्ड कर दो कल का होमवर्क, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये होमवर्क किसी ने भी अगर किया है तो जस्ट फॉरवर्ड मी, तो मैं डिस्कस करता हूँ. A girl walks along a straight drop. Basically याद रखो, मोशन इज डिफिकल्ट चैप्टर. आई थिंक किसी ने भी किया है या मुझे दिया है तो वहीं से फॉरवर्ड कर दो. Most of the students are absent today. With Nigam is not there. Where is Tanvi? तानिया, तन्वी भी थी ना, जिसने मुझे व्हाट्सएप किया था क्लास के लिए. ये कौन सा होमवर्क है? नहीं, दिस इज आई 9th क्लास का होमवर्क है. ये कौन सा होमवर्क है 9th क्लास का? दिस इज मैथ्स होमवर्क, सॉरी. तुम लोग तो ग्रुप पे डाल दिया करो, ज्यादा हो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. साइंस का होमवर्क किसी ने किया है? साइंस वाला होमवर्क किसी ने नहीं किया? एक क्वेश्चन दिया था मैंने साइंस का होमवर्क. आई थिंक किसी ने कल साइंस का होमवर्क भेजा है, सो दैट आई कैन डिस्कस इट. निगम ने किया, बट निगम इज नॉट प्रेजेंट. आई होप, आई थिंक निगम इज नॉट प्रेजेंट. तो निगम का है. तुम लोग तो ग्रुप पे डाल दिया करो, पर्सनली पोस्ट मत किया करो. निगम ने किया बट, और सो ही इज नॉट लाइव, तो आई एम नॉट टेकिंग हिज पेपर. और मुझे मिल नहीं रहा है. अगर तुमने दिया तो फॉरवर्ड कर दो इसको. कोई भी है प्रेजेंट है जिसमें से, जस्ट फॉरवर्ड मी. अगर फॉरवर्ड नहीं करोगे तो देन अटेम्प्ट इट, है ना. देन फिर नया होमवर्क. हाँ, ये आया. हाँ, किया. वेरी गुड. रुतवी ने किया है. सो आई विल चेक इट. आई विल चेक दिस क्वेश्चन. We'll download and check this question. And I will download the question also. क्वेश्चन तो ऐसे भी चलेगा. नाउ हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. अभी कल लॉज ऑफ मोशन के और क्वेश्चन करेंगे. विल डिस्कस द होमवर्क. लास्ट में होमवर्क डिस्कस करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. हाँ, कल्पना ने भी फॉरवर्ड कर दिया, तो किसी एक का भी डिस्कस कर लेता हूँ. रुतवी ने, अच्छा रुतवी, अच्छा कल्पना, ओके. रुतवी ने फॉरवर्ड कर दिया. ओके, आई गॉट इट. सॉरी, आई फॉरगॉट. वेरी गुड. सो लेट्स डिस्कस इट. There was only one question, no problem in discussion. I'm going to discuss it. Wait a second. A girl walks along the straight path to drop a letter in a letter box and comes back to her initial. एक बात याद रखो, अभी भी जो डिफिकल्ट चैप्टर है वो मोशन है. फोर्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है. इसलिए फिर भी अगर तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन और हम लोग करेंगे. ओके. A girl walks along a straight path to drop a letter in the letter box and come back to her initial position. Her displacement time graph shown in figure. Plot the velocity time graph. This is basically displacement time graph. So very good. So this is displacement time graph, and yes, plot the velocity time graph. So velocity time graph, that means
ओके, आई हैव टोल्ड यू वेलोसिटी टाइम, अगर ऐसे ग्राफ होगा तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट. सो हियर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बट इट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. It is increasing at the constant rate. Is it clear? It is increasing at the constant rate. When graph is straight line, so this is increasing at the constant rate. And you can find the value of acceleration. This will be positive value because velocity is increasing. Sorry, because displacement is increasing. The object is moving in positive direction. X is increasing. The object is moving in constant direction with positive velocity. So this is velocity time graph. So here velocity will be positive, and you can calculate the velocity from this graph. This side, I think this side is 10. Velocity is displacement upon time, 10 upon 50. Sorry, 100 upon 50. Very good. 100 upon 50. The velocity will be 100 upon 50. Very good. Perfect. 100 upon 50. So 100 upon 50 will be 2. Yes, velocity will be 2. After that, x is decreasing. That means velocity will be negative. No, either after 50 seconds. Now this portion is wrong. This portion is wrong. Time is moving. Time cannot move in backward direction. So this should be like this. ये ऐसे आना चाहिए. After 50 seconds. After 50 seconds. So this will be 0, 40, not 100 second, up to 50 second. यहाँ पे correction करता हूँ मैं. I will cancel it. सब लोग देख लेना अगर किया हो. Up to 50 second the velocity is positive, and after 50 second the velocity is negative because x is decreasing now. पहले x increase कर रहा था, अब x decrease कर रहा है. तो x is decreasing, so velocity is negative. तो I hope everyone understand जिसने किया है. So velocity is negative up to 100 seconds. Read the graph properly. From 0 to 50 seconds, velocity is positive. This is velocity. And from 50 to 100 seconds, the velocity is negative. Negative means x is here, x is increasing, here x is decreasing. I hope you understand this question. And मैंने चेक कर लिया तो सारे बच्चे, अब मैं फॉरवर्ड नहीं कर पाता, भूल जाता हूँ चेक किया हुआ, मगर सब लोग, मैं नया होमवर्क नहीं दे रहा हूँ इसको. आई थिंक ये रुत्वी का है, तो सब लोग इस होमवर्क को रिपीट करके, जितने भी लाइव है सुन लो ध्यान से, सब लोग इसको रीसेंड करना होमवर्क को, है ना. एक ही बच्चे ने सेंड किया था, एक ही बच्चे ने होमवर्क किया था, बाकी सब जितने भी हैं, सो आई थिंक मेरे पास फॉरवर्डेड सिर्फ एक बच्चे का है. तो ये रुत्वी भी इसको रीसॉल्व करेगी, है ना. ढंग से फिर से सही करके सॉल्व करना, जो मैंने करेक्शन किया उसको यूज करके सॉल्व करके. तो नया होमवर्क नहीं देता हूँ साइंस में, इसी होमवर्क को दोबारा से रिपीट करना. चलो अब मैं स्ट्रीमिंग फिनिश करता हूँ. टेक केयर, बाय. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट मैथ की क्लास होगी, मैथ की क्लास मंडे को होगी.